done. Yeah. Over here, you can see a petri has lots of. Are you wearing your headphones, or I think there's some echo? Let's say something else. No, now it's okay. Okay, Acha. yeah. Now over here, you can see that you have these recombinant plasmids, okay? And what are you doing? You want to introduce these into bacteria. You want to give them heat shock and calcium chloride, right? And then you try to put these recombinant plasmids in bacteria. And you are looking at, यहाँ पे, for purpose of ease, 4 bacteria have been shown to you. Let me just number them. 1, 2, 3, 4. All of these are bacteria, ठीक है? Bacteria का अपना loop of DNA, this is bacterial loop of DNA, bacterial loop of DNA, and over here only in this is the bacterium that has actually successfully taken up the recombinant DNA. Do you see it? This shows you, that the success rate of bacteria taking up the plasmid is very low. ठीक है? सिर्फ कम बैक्टीरिया जो है ना वो अपने अंदर ले लेते हैं प्लाज्मिड. सो दिस मीन्स दैट लेट्स से कि आपके पास ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें तो हजारों बैक्टीरिया हो सकते हैं. सो इन दैट केस यू नीड टू सेपरेट दिस बैक्टीरियम फ्रॉम दीज. ठीक है? हाउ टू डू दैट? अच्छा, और एक्चुअली हम क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें तो हमें सेपरेशन करनी है, तो कैसे हम सेपरेट करेंगे? लेट्स सी हाउ आर वी डूइंग इट. Not all the bacteria in the culture will successfully take up the plasmid. Achha. Why have I used the word take up the plasmid? Because this is the way you are going to describe it to the examiner. ठीक है? Absorb the plasmid या whatever, वो नहीं use करना. आपको ये terminology use करनी है कि not all the bacteria in the culture will take up the plasmid successfully. This makes sense because it'll only take up the because wait a second, not all the bacteria in the culture will take up the plasmid. Okay, that makes sense because now the bacteria will only take up the recombinant plasmid or what? बैक्टीरिया कुछ भी कर सकता है. देखो, एक सेंटेंस, एक बुलेट पॉइंट पढ़ो और सेकंड वाला बुलेट पॉइंट पढ़ो. Yeah, not all plasmids in the mixture will have successfully recombinant DNA. सही है. तो वो तो मुझे समझ आता है कि सारे plasmids of course उसमें वो नहीं हो रही होगी ना. Not all of them have formed like successfully formed recombinant DNA, right? Only some of them have. But why does not all the bacteria in the culture, like why does it not successfully take up the plasmid? Like थोड़े बस रह जाते हैं, यही है logic? It's just that the logic is, it's just that, it's not all the bacteria break open. Simple. Heat shock आप दे रहे हैं, सब नहीं shock. और अगर आपने बहुत ज्यादा heat shock दे दिया, हो सकता है बैक्टीरिया ही dead हो जाए. Isn't it? Bacteria भी तो it can die. They're so tiny. So that's why there are many possibilities. Not all the bacteria take up the plasmid. Not all the plasmids become recombinant plasmids. So how to make sure that transformation has occurred or not? How to make sure? For that, what do? We used some markers, okay? And those markers are known as antibiotic resistance genes. Okay. ठीक है? अब इस चीज को समझने के लिए थोड़ा सा सब्र से सोचिए. You have to think very carefully. What we do is that we use specialized plasmids. वो कैसे plasmids हैं कि हमने उन plasmids के अंदर gene markers डाले हुए हैं, and those gene markers are antibiotic resistance genes. अच्छा. From the AS knowledge that we have given to students, हमने उनको ये बताया है कि जनरली व्हेन वी टीच देम इन्फेक्शंस एंड एंटीबायोटिक्स, हम उनको कहते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ना, ये इसलिए रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा इस एंटीबायोटिक को बिकॉज के इस बैक्टीरियम के अंदर एक प्लाज्मिड आ गया है. ठीक है? और उस प्लाज्मिड के अंदर एक रेजिस्टेंस जीन आ गया है फॉर लेट्स से एंटीबायोटिक ए. तो अगर हम उस बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक ए देते हैं तो बैक्टीरिया किल नहीं होता. ठीक है? ये एक बैकग्राउंड नॉलेज है. ठीक है? तो हम क्या करें? We use these genes for antibiotic resistance as a gene marker to select which bacterium or which bacteria have taken up the plasmid.
ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर दिस यू विल हैव टू रीड दिस, ठीक है, इसको पढ़ो अच्छी तरह से, एंड यू नीड अ गुड 5 to 7 to 8 minutes टू अंडरस्टैंड दिस। इसको पढ़ो, नहीं समझ आता, आई एक्सप्लेन यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, पहले खुद से लेकर पढ़ो। ये टेट्रासाइक्लिन जीन हमने तोड़ दिया। We've broken the tetracycline gene and we have kept the ampicillin resistance gene intact. Let's look at the question. Yeah. Complete the table to show whether the bacteria which have taken up each different circles of DNA are or not resistant to ampicillin, to tetracycline, or to both. Show presence of resistance with a tick and absence of resistance with a cross. ठीक है. Yeah. Of DNA taken up by the bacteria, unaltered plasmids. Unaltered plasmid means कि ये recombinant नहीं है, ठीक है. Will the unaltered plasmids be resistant to ampicillin? Yes. Wait, Yes. will they be? Yes. ठीक है, because the gene is intact. Will the unaltered plasmids be resistant to tetracycline? Unaltered. Yeah. Wait, unaltered Yes. no. Yeah, wait, yes. Unaltered means के बिल्कुल ठीक ठाक है, ऐसे है. फॉर एग्जाम्पल अनऑल्टर्ड का मतलब यहाँ पे एम्पिसिलिन जीन लगी हुई है, यहाँ पे टेट्रासाइक्लिन लगी है, और इसमें कोई भी नहीं हमने ऑल्ट्रेशन की हुई, ठीक है. Yeah. अच्छा, नाउ सेकंड स्टेप, recombinant plasmid that have taken up the wanted gene. Wanted मतलब ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को wanted बोला है, wanted का मतलब नॉवेल जीन. तो इन अदर दे आर आस्किंग यू कि अगर अगर अब मैं इसको चेंज करी हूँ, नाउ they are talking about this plasmid. Will this plasmid show resistance to ampicillin? Yes. Yeah. Yes. Will this plasmid show resistance to tetracycline? Yes or no? Wait, will this plasmid to the common plasmid show resistance to the tetracycline? Miss, can you go on the diagram a second? ये रहा डायग्राम आपके सामने पड़ा हुआ है. अच्छा हाँ सही. Will it show resistance? I have broken the No, it's gonna be across. cross. अच्छा, circles of the wanted gene. सिर्फ वांटेड जीन की बात कर रहे हैं, वांटेड वाला. वांटेड मींस किसकी बात कर रहे हैं इसमें, सिर्फ ये ब्लैक वाले टुकड़े की बात कर रहे हैं, ये नॉवल जीन, ठीक है. ये ऐसे कंफ्यूज करने के लिए बच्चों को बोला है. तो दे जस्ट टॉकिंग अबाउट द नॉवल जीन. विल द नॉवल जीन शो रेजिस्टेंस टू एम्पिसिलिन? नो. No. इट will no, and also it will not show resistance to tetracycline. Look, समझ आई? अब देखो इसको Yeah. गौर से. These kind of questions are asked in exams. Students find it very confusing, but actually they are not. ठीक है? And Abdullah, these days you a lot. मैं बहुत जल्दी जल्दी करा रही हूँ, so it's a must that you revise whatever I've taught you. Yeah. And I've already shared. मैंने प्रेजेंटेशन शेयर की है, और आप रीड एंड राइट खोलो, और रीड एंड राइट से जितने क्वेश्चंस इस पे कर सकते हो करो, क्योंकि आई एम टेलिंग यू जीन टेक के क्वेश्चंस बहुत टफ होते हैं. Yeah. I'm supposed. ठीक है, और किसी दिन हम मिलके कर लेंगे. You can just select some questions and we can do it together. Yeah. I think it's enough for today, and then next class मैंने भेजा है ना, कौन सा दिन मैंने किया है? Yeah. Tomorrow what time are you free? Tomorrow it's